Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar What's Up with the Current Market, conducted by Kotak Securities. Today we have with us Mr. Shrikant Chouhan, Head of Research at Kotak Securities. On your screen, you have got a space where you can type your questions that you may have, and we'll try to address those during our Q&A session. Without further ado, I would like to welcome and call upon Mr. Shrikant Chouhan, Head of Research. Over to you, sir. Thank you, Sudhir, and thank you, everyone. Today, we have organized this particular webinar is mainly because of the specific event which has happened uh, after the major event of Fed. We were like of the view to just discuss about the market and to give about like what is really happening in the market and what is going to be in the near future based on the current statistics, based on the macro things which are there. On the domestic fronts, number of companies they have announced their numbers. So sectorally, what are the what the trend is emerging, and also we are going to discuss about some numbers about these stocks. So broadly, we have like kept this is mainly because of the particular event which has happened in the on uh, on Wednesday night. I'm to say on Thursday we faced the overall outcome, and we saw the market was crossing to the levels of 17,000. It was not at all expected that the market will cross this level so easily and in the near term. But yes, eventually we saw these levels. So आज का जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा वो यही है कि ये बड़े इवेंट के बाद अब मार्केट में हमें क्या लग रहा है, और यहाँ से हमें हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हमें कहाँ पे एग्जैक्टली फोकस करना है. सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. With me, my entire team is there. From the technical team, Amol Athawale is there. From the fundamental team, we have like a few key persons who are going to talk about their sectors, and they will help you in solving your queries, because we are going to keep Q&A sessions specially for all of you. So in this session also we are going to discuss about Bank Nifty and Nifty IT Index. So हम Nifty IT Index के भी बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के भी ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा सा ये सेशन को थोड़ा और ब्रॉड करेंगे. लेकिन यस, हमें सबसे पहले जो फोकस करना है वो मैक्रो थिंग्स के ऊपर करना है कि भी एग्जैक्टली हुआ क्या है. सो इफ वी जस्ट गो थ्रू विद द फ्यू इवेंट्स ऑफ द पास्ट, then the major event on which we are focusing today is the announcement of 75 bips rate hike in the Fed meet. What it means? It means that they have increased for the second consecutive time 75 bips, and they are targeting one more hike in the coming meet in the month of September. So अगस्त में हमें जो इवेंट को फेस करना है वो इंडिया की जो क्रेडिट पॉलिसी है हम उसे फेस करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त. सितंबर में फेड की और एक मीटिंग रहेगी, और तब तक कैसे डेटा निकल के आते हैं उसके ऊपर दे आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ने वाले ही है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है. बट एट द सेम टाइम 75 बिप्स का एक उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशन दिया है. सो अगर 75 बिप्स पॉइंट की ही अगर रेट हाइक अगर आनी है तो हमें लगता है मार्केट ने इसे डाइजेस्ट कर लिया है, और इसी वजह से लास्ट टाइम भी जब 75 बिप्स पॉइंट्स की जब रेट हाइक आई मार्केट में, तब मार्केट ने इनफैक्ट उसे चीयर किया. बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट दो स्टेटमेंट्स थे. सबसे पहले ये स्टेटमेंट था कि जो यूएस इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, और एक सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि वहाँ पे जो ट्रेंड है, स्पेंडिंग का ट्रेंड है या तो जो प्रोडक्शन का ट्रेंड है, वहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनिंग आ चुकी है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा स्पेंडिंग कम हुआ है, थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ है. बट एट द सेम टाइम जो रिसेशनरी जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स नहीं है, और इसी वजह से ये जो भी रेट हाइक की जो मूव फेड ने ली है वो एक पॉजिटिव मूव बन के निकल रही है, या तो शायद इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द वे दे आर एक्सपेक्टिंग. जैसे उन्होंने बताया था कि हम काफी हार्शली लैंड नहीं करेंगे, सिमिलरली ऑन दैट पाथ ओनली
the economy is moving. So सबसे बड़ी बात हमें यही लग रही है कि as per the expectations of Fed chairman, the economy is performing, and that's the reason we saw substantial rally in US markets. After that, we saw similar sort of rally in Asian markets, and now even in that particular basket of Asian markets, Indian markets are also doing well. Today, for the consecutive day, we saw substantial rally in the market, and number of sectors, number of stocks did well. Now, if we go through with a few other parameters, then in that 10-year bond yield, which was around some 3.50 few months back, is now at 2.67%, which actually helps emerging markets because the fall in the 10-year bond yield actually helps FIIs. I mean to say, it reduces outflows from the emerging markets. It's not, it is not helping to the FIIs. It is like reducing the outflows from the emerging markets to the developed markets. So, which is positive, and it is happening since last 2 months. It is dipping from the highs gradually, and now it is at the lowest point of last 2 months, around 2.67, 2.65, which is positive. If we go through with the dollar index, then dollar index was around 109. From there all the way, it is now at 106. In case if we see the dollar index is dropping below the mark of 103, then it will help a lot to emerging markets, because in that case, the currency depreciation which is there for all these emerging markets will, the impact of that excuse excuse me, the impact of that will come down. So in that direction, or in that particular context, if we see our currency, then our currency also depreciated in last 3-4 months, from the levels of 74 to almost 80. But if we compare the rate of depreciation with other countries in the emerging market, then that is very, very low. And that's the reason we are seeing some weakness for exporting companies, but broader trend, it's still intact. And domestic institutions, they are consistently infusing funds in the economy, into the stock market, which is positive. Even in last 1 week, if we see the FII selling, then it is much lesser than last few weeks. And in this particular month, the FII sold not more than 10,000 crore, which actually they were selling some 40,000 to 50,000 crores since last so many months. So all these things are actually helping the market, and that's the reason we saw the market was crossing to the levels of 17,000, and today we closed comfortably above the mark of 17,000. Now, what will be the future? So if we just go through with some domestic events, then on that particularly, uh, the important part, based on technicals or based on some correlation of data, if we consider to that, then in that, out of like Nifty 500 stocks, nearly 10% stocks, I'm going to say nearly 50, 55 stocks, they recovered more than 50% from their immediate lows. From their immediate lows. Nearly 300 stocks, they are trading 20% higher from the recent lows, which is clearly indicates that the breadth of the market is turning better as compared to the past. So since October 2021, we saw sell off in the market, and whenever there was like the when we went through with the uh, breadth of the market, that time we saw that the numbers were completely different. But this time, these numbers are quite encouraging, and nearly 450 stocks are trading 10% higher from the recent lows. So it clearly shows that the breadth is improving, and if the breadth is improving, that means now there is lesser probability of breaking the immediate lows. So we are going to either consolidate between the range of 17,500 and 16,500 on the downside, or we will continuously gradually move towards the levels of 18,000. That's the view. But till the market is not crossing 18,000, जब तक मार्केट 18,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक
मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए नजर आएगा. So 18,600 is the very very important level on which we have to focus. But on immediate basis, अगर मुझे कुछ फोकस करना है तो 17,400, 17,500 ये एक important level है on which we have to focus. On the downside, in the worst case scenario, we may see the levels of 16,400, but on immediate basis, I'm going to say in the near term, 16,800 is going to act as strong support for the market. So we discuss about the acha. Then if we go through with some results, then except IT and except metal, we saw numbers which are like supporting to the overall expectations. I'm going to say the companies which have reported their numbers, they are better than the expectations, or they have just like in line with the expectations, except IT and except metal. So, and on IT and on metals, there was like very clear expectations that they are not going to report decent numbers. So one thing is very clear that as per expectations, the market is moving or the numbers are coming, and that's the reason the market is not entering into that disappointment mode. Now, if we go through with some multiples for our particular Nifty 50 and EPS, then for 23, the EPS is around 806 that we are calculating. We are tracking the top 50 stocks of Nifty. And if we just go through with the numbers of those companies, then uh, till June, uh, when we calculated these numbers, then we have like a projection that the Nifty 50 will report EPS of rupees 806 for FY23 and clear 932 for FY24. We were projecting some 950 for 24, but now we have reduced that to the 932, which is very uh, nominal, that we can say that we have revised the EPS value. But otherwise, we are of the view that the markets are uh, turning better, and all these important levels like 16,500 or 800 going to act as very good support for the market. Next, so if we just go through with the chart of Nifty, then it is one thing is very clear that after this spectacular rally from the lows of March 2020, it went to the levels of 18,600 in the month of October 2021, and after that, the market corrected gradually from the highs, and it whenever like there was like some rebound in the market, we saw selling uh, uh, in that proportion, and eventually the market made a new low. So till date, the market is into lower top, lower bottom series, which is very clear on the screen. After hitting the highest high of 18,500, we saw the levels of 18,350 and later on 18,150. But this time in the month of June, the market made a significant lowest low around 15,180, and after hitting those levels we saw some positive developments in terms of data, in terms of macro factors, and also we saw equal amount of rally in the market. So currently the market is above the levels of 17,000, which is positive, and it has retraced almost 60% of the more than 50% of the entire fall. So it shows that if there is any correction, then the market will consolidate within the range. It will not fall vertically. That's the overall view. Now, if we go to the next slide, yeah, for the next slide, it's a chart of बैंक निफ्टी. और अगर आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो यही है कि इन द मंथ ऑफ जून जब निफ्टी ने एक नया लो किया था, दैट टाइम बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ लो बना के, यानी कि डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाने के बाद एक रिकवरी पैटर्न बनाया है. सो इट शोज दैट द बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू बैंक, एज कम्पेयर टू निफ्टी.
हमने कई बार हमारे वेबिनार या प्रेजेंटेशंस में यही बात कही थी कि अगर यहाँ से कोई अगर एक सेक्टर है कि जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है वेरी कॉन्फिडेंटली, तो वो था फाइनेंशियल्स. और दिस पर्टिकुलर सेक्टर डिड एक्सट्रीमली वेल इन लास्ट फ्यू वीक्स. कई सारे स्टॉक्स में हमने काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स देखे. स्टेट बैंक इनफैक्ट जो हमारा टॉप पिक था वो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई के करीब आ चुका है. और अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इज लाइक नाउ based on the technicals is heading for the levels of 38,000. That's the view. But above 38,000, the next level to watch out for would be 39,000, where the bank nifty is having ultimate resistance. So agar if we compare 39,000 with the corresponding numbers of nifty, then it should be around 17,500 for the nifty. So if we see the Nifty touching the levels of 17,400 or 500, then corresponding numbers should be 39,000 for the bank Nifty. So 39,000 and 17,400 are the important levels to watch out for. On the downside, for the bank Nifty, the important level is around 35,500 or 36,000, because there the bank Nifty had spent a lot of time when it was into downtrend. So between 36,000 and 35,500, we should be buyer if there is a medium to long term view. Next. So it's a chart of Nifty IT, and there also we saw vertical decline in last I can say several months, and it happened mainly because of the recession worries as well as inflation worries in the global markets. कभी भी अगर हमने यूएस मार्केट्स में कुछ पेन देखा है तो आईटी इंडेक्स ऑलवेज इम्पैक्ट करता है. इस बार का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा था क्योंकि हम लोगों ने रैली भी उतनी देखी. पैंडेमिक के टाइम पे निफ्टी आईटी इंडेक्स वाज अराउंड 11,000 10,000 लेवल्स. 10,000 से ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो 40,000 के करीब गया था, यानी अराउंड 40,000. So from 11,000 it went to the levels of 40,000. From there all the way it corrected back to the levels of 26,000 almost in the month of June, and now it is forming some positive divergence formation on the daily chart. So what is positive divergence? I'm going to say the price is moving up. The oscillators are turning upward, but price is still into that falling mode. What it means? It means that now the last leg of sell-off is happening, but otherwise those who are like experts or those who knows about the valuations of the company or those who knows about the future, I can say based on like whatever their reading or their own analysis, they have somebody those who are like experts of the market, they have started buying into the sector. And today we saw a, a rally beyond the levels of 29,000, which was not at all expected in the near term. But in just last 3 days, the bank nifty managed to recover almost 10% from the lows. Number of stocks like TCS, then mid cap IT companies, as well as large cap IT companies, they recovered from the lows. And Infosys, which was around some 1400, touched the highs of 1515 today's date. So हमें लग रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म बॉटम हुआ है. आई थिंक जितना यूएस मार्केट से क्लैरिटी हमें मिलेगी उतना ही हमें एक अप ट्रेंड हमें निफ्टी आईटी में भी देखने मिलेगा. और अगर पास्ट के डेटा को कोरिलेट करते हैं तो एक बात ऑलवेज समझ में आती है, वो ये है कि if the market starts bottoming out, the broader market, then the very first sector which actually gives substantial return or which turns positive remains always IT. And we are expecting IT to do well in the near future. Number of stocks have fallen to their extreme levels, so all these large cap IT companies are really showing a lot of I mean to say they are good in terms of their fundamentals because decent upside is there. But for mid cap IT companies, we need to see that whether they manages to hold
above their important support areas or not. But Nifty IT index is clearly indicating us that we are going to see furthermore upward activity in the near term, and the chances of hitting 35,000 or 36,000 are very, very high. So again, 10 to 15% sort of rally we can expect in the near term from the IT index. But the strategy should be to buy all these indices only if there is any correction. Right now, we are at the extreme level. So for intraday purpose, certainly you may take any a long or short call. But if there is a positional view, then it is better to buy all these indices on important support levels. Next, for Nifty Auto Index, again the view is same. Here also, uh, we saw a strong recovery after hitting the panic lows. But if you see the overall performance of the Nifty Auto Index, then it is outperforming. I mean to say it is into new highs. And if it is already trading into new high when the markets are still uh, uh, very I mean to say still at the 50% of the previous entire fall, then that means somebody must have taken a very strong buy call on the auto index, and that's the reason we are seeing auto index is trading into new highs. So if we just go through with the overall technical pattern of it, then we are of the view that there is furthermore upside very clearly, and the chart is indicating us that if there is any correction, any pullback from the highs, then we should be buyer. Like today, we saw some profit taking in auto companies, but uh, at the starting of the month, we are going to see all these auto companies are going to report their monthly numbers, and then it will decide furthermore activity for all these auto companies. But broadly, based on technicals, we are bullish on Mahindra and Mahindra as well as Tata Motors. Fundamentally, also we are bullish on these two stocks heavily. Also, we like Minda Industries. So there are like few more companies, but we are technically as well as fundamentally bullish on Mahindra and Mahindra as well as Tata Motors, and we should be buyer if there is any correction in the auto index in the near term. Next, okay. So for we have in this session we are going to also brief you about the research call categories that we provide to our clients and which is available on our website and on the app. So we like just my team member Mr. Amul, he will explain you about the call categories, that how actually we are giving the calls and how uh, you guys, I mean to say traders, can trade in all these categories. It is not specifically for the derivatives, it is for even for the cash traders as well as for the derivative traders. So basically, we use the base of cash prices to give any call, but how to use these categories, for that Amol is with me and he will explain you about these categories as well as on the reports. Over to Thank you, you. sir. Yes, thank you, Shrikant sir. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपको कि जब हम लास्ट आई थिंक 2000 जनवरी टू 2020, ओके, तब हम लोग जब बात कर रहे थे, तब आपने Mhm. बताया था कि ऑटो इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेगा और अच्छा चलेगा, क्योंकि आपने जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल फॉर्मेशन बताए थे. और आज जाके जब मैं जुलाई में देखता हूँ तो वो एग्जैक्ट ऐसा ही चला है. इनफैक्ट इट इज आउट परफॉर्मिंग. सो ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला क्वेश्चन है कि अभी भी आपको लगता है कि ऑटो इंडेक्स में स्ट्रेंथ है. आपने बताया वैसे कि एमएनएम और ये है, बट जो जिन्होंने ये रैली मिस किया, समझ लो, मुझे भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि मार्केट एवरी टाइम फॉल हो रहा था और ऑटो इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा. बट आपका एजम्पशन और वो जो थ्योरी था वो बैंग ऑन था. सो आई एम रियली सरप्राइज. तो इन्वेस्टर के लिए बाइंग ऑन डिप्स वाला ऑटो इंडेक्स में स्ट्रेटेजी वर्क होगा? और एक ट्रेडर के हिसाब से क्वेश्चन है कि आज टुडे निफ्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हिट 200 डे मूविंग एवरेज. इट आल्सो क्रॉस द 17,000 मार्क. आई थिंक 29 अप्रैल, यस 29 अप्रैल के आसपास कहीं तो निफ्टी 200 डीएमए के आसपास था और आज अभी वापस आया है. सो व्हाट्स योर टेक फॉर ट्रेडर्स एंड फॉर द इन्वेस्टर्स? Sure.
Yeah, it's a good question because, like, yes, number of our clients they were like also discussing about these indices, and uh, like when we go through with the past or the history or chart of last few years, and if we correlate these few indices based on their relative performance, always whenever there is like a reversal in activity in the market after spending a lot of time into that particular corrective mode, very first sector which turns upward is means most of the time I have seen that the consumption sector actually recovers from the lows. And this time also, when the market actually was into that down phase, we saw recovery in the auto index is mainly because of the lower interest rates, which were there since last so many months. So actually that helped, and the consumption trend, which uh, if there is like start of the new trend, then always consumption sector or auto index means which is the part of consumption always turns up. So this time also we saw similar sort of activity, and auto index, which was relatively doing well when the market was falling, actually turned sharply higher after the specific announcements from the companies that they are entering into EV business, or they have started reporting numbers which are like still they were like still better than the expectations. So all these things actually help the auto index to move higher. uh, and yes, still even at current levels, we are of the view that if we uh, start investing into these companies, or if we take trading position in these companies like Tata Motors or Mahindra and Mahindra or other companies on which we discuss, and we are going to discuss because we have auto analyst also with us. So he will explain you about the overall fundamental picture of the sector. But Sector. if we keep investing into this particular sector, I think we are going to get very good returns. For the Nifty, one thing is very clear that after crossing this 200 days simple moving average, it has given confidence to the to those who are like following to the 200 days simple moving average. And it's not uh, it is not like just with the retail investors. Also mutual funds and domestic institutions, they also follows, Oh, even FIIs, they follows to the average line of 200 days. oh, So it gives some confidence. It shows that the market is now uh, stabilizing, and it is again returning back to the broader investment cost price. So that's the reason I think the market did well in today's date also. oh, fine. It's a very interesting comment. Okay. Okay. So now I'm moving to the technical research called categories. Okay. I think we at Kotak Securities give a recommendation on 6 broad categories. The first category is इंट्राडे, जो आई थिंक ट्रेडर के हिसाब से सभी का इंटरेस्ट, सभी का लव वही होता है कि उनको अच्छा एक डे ट्रेडर बनना है. सो वी फॉर आवर फर्स्ट कैटेगरी इज इंट्राडे. सो जब हम कैटेगरी में जाते, इंट्राडे में जाते, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इनटू आवर माइंड इज सिलेक्शन. सो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं अगर इंट्राडे कॉल्स रिकमेंडेशन देने हैं, तो जनरली हम प्रेफर करते हैं मोमेंटम पिक हो, या तो ब्रेकआउट हो, या रिवर्सल हो. द रीजन बिहाइंड दैट कि उसमें से फास्ट मोमेंटम आ जाता है. अगर ब्रेकआउट है तो प्राइस एक्शन फास्ट होता है, और वो डे ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. द सेकंड कैटेगरी आता है हमारा टाइम फ्रेम. So we generally give categorize with a 2 time frame. एक हम जो इंट्राडे कॉल्स देते हैं, जो प्री ओपनिंग कॉल्स देते हैं, जो मार्केट ओपन होने से पहले देते हैं. प्री ओपनिंग मतलब बिफोर 9 देते हैं, 8:45 से 9 के टाइम फ्रेम में देते हैं. और दूसरा वो है वो रेगुलर इंट्राडे कॉल देते हैं, जहाँ पे मोमेंटम एक्शंस या ब्रेकआउट रिवर्सल जो कुछ ट्रिगर होता है उसके हिसाब से हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं. प्री ओपनिंग कॉल के लिए कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हमने ऑब्जर्व किया है कि उनको जो मार्केट ओपनिंग के बाद वाला जो मोमेंटम है, वही उसको इनकैश करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उधर ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोमेंटम आता है.
और दूसरा उसमें कि उधर क्विक एंट्री करके क्विक एग्जिट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उधर रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट वो एक कैटेगरी है जहाँ पे मोमेंटम पिक्स काफ़ी अच्छे वर्क होते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है एज अ डे ट्रेडर के लिए। सो मुझे लगता है कि एनीथिंग अराउंड 1% टू 1.5% मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो डे ट्रेडिंग में, विच इज गुड। 1.5 आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट कई बार ऐसा होता है कि हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं या मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, सो इन दैट केस आई थिंक 1.5 थोड़ा सा सेफ हो जाता है। अदरवाइज 1% हम 1 to 1.25% हम लोग प्रेफर करते हैं। On the flip side, I think target roughly around 1.5%. If you are getting 1.5%, then we believe it's a good price target. And the second price target generally we recommend is maximum 2.5%. I think even 1.5% भी अच्छा है। 2.5% कंसिस्टेंटली मार्केट में बीट कर पाना, स्पेशली जो क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डे ट्रेडर्स के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। द सेकंड कैटेगरी विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज 5 days पोजिशनल। आई थिंक ये थोड़ा सा मिक्स कैटेगरी है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो ज़्यादा रहते हैं, बट कई डे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो पोजीशन कैरी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ही कि मार्केट अच्छा है, मोमेंटम में डे ट्रेडिंग में अगर क्लाइंट्स ने या उनके सिस्टम बेस पे लिया है, एंड ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर सिनेरियो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, यूरोप अच्छा है, अच्छा क्लोजिंग हो रहा है, डाउ फ्यूचर अच्छा कर रहा है, बट स्टॉक चला नहीं है, तो वो कैटेगरी में जनरली दे वुड लाइक टू कंटिन्यू द पोजीशन विद द सेम स्टॉप लॉस, टेक द एडवांटेज ऑफ द ओपनिंग। सो वो एक मिक्स क्राउड रहता है। जो प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो तो रहते ही है, प्लस ऐसे भी ट्रेडर्स रहते हैं कि जिनका डे ट्रेडिंग में क्लिक नहीं हुआ है, तो चलो एक दिन कैरी करते हैं या 2 दिन कैरी करके देखते हैं, बिकॉज द चार्ट स्ट्रक्चर एंड द चार्ट टेक्सचर इज पॉजिटिव। तो वो ये दो कैटेगरी मिक्स होती है। सिलेक्शन अगर आप उसमें देखोगे तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि डेली फॉर्मेशन, डेली पैटर्न, डेली रिवर्सल, डेली चार्ट्स पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है और कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, ये डेली बेसिस पे ही ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि हम वीकली पे अगर हम देखते हैं तो वी जनरली गेट अ बिगर रिस्क, तो स्टॉप लॉस लंबा हो जाता है, और वो मोमेंटम अपने को 5 days में अगर लगता है कि ये मोमेंटम जो चालू हुआ है ये 5 days में चलना भी चाहिए, तो जनरली टारगेट्स हम लोग रखते हैं उसके लिए 2.5% टू 5%। उससे ज़्यादा ऑन अ वीकली बेसिस मिल सकता है अगर हाई वोलेटिलिटी है तो, बट कंसिस्टेंटली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो ये जो एक रिवॉर्ड वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अभी आता है रिस्क का बात, उसमें आई थिंक रिस्क फॉर द 5 days पोजिशनल कॉल, आई थिंक हम डे ट्रेडिंग के लिए देखते हैं तो 1 to 1.5। So if you are going for the positional momentum picks, I think 2.5% for the blue chip company stocks, I think it is sufficient हो जाता है। Sometimes maximum 2.75 तक भी आप जा सकते हो, but anything beyond 3% वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर आपका रिवॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, और फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेशन हमको नहीं लगता कि वो फेवरेबल में आ सकता है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। उसके बाद आता है जो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का इंटरेस्टिंग और लाइकिंग जहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्शन ट्रेड्स, जो इन कमिंग डेज इट इज टू फेमस। तो ऑप्शन ट्रेड में जनरली हम लोग निफ्टी वीकली ऑप्शन ट्रेड और बैंक निफ्टी, ऐसे दो इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो ये दो कैटेगरीज आते हैं, और एक स्टॉक ऑप्शन आता है। बट अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट रहता है वो इंडेक्स ऑप्शन में ज़्यादा रहता है। अगर आप इफ़ यू कंपेयर विद द वॉल्यूम, तो स्टॉक ऑप्शन से ज़्यादा आपको इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो निफ्टी वीकली ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, ये दो सेगमेंट्स है जो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं। अभी हम इसके ऊपर व्हेन वी गोइंग फॉर दैट, आई थिंक मोमेंटम इज अ बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर द ऑप्शन ट्रेडर। उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इफ यू गो कॉन्ट्रा, समटाइम इट्स वर्क, नो डाउट अबाउट दैट, बट फॉर द लॉन्गर टर्म ऐसा हो जाता है कि अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर गया तो ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होता है और स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होता। सो फॉर द ऑप्शन ट्रेडर वी जनरली फोकस ऑन अ मोमेंटम। If the momentum is continue, then we will like to continue or to trail stop loss. If the momentum is dropping, I think then it's better to exit out from the option trade. तो मोर ऑफ आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है जो डायरेक्शनल ट्रेड की तरफ ज़्यादा वर्क होता है, और हम लोग उसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। द फोर्थ कैटेगरी विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज टेक्निकल कैरी फॉरवर्ड।
टेक्निक जनरली इट इज नोन एज अ लास्ट आवर और अ क्लोजिंग ट्रेड। एक डिफरेंट कैटेगरी है ट्रेडर्स का जो ओपनिंग जो होता है मार्केट का उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। जैसे कि इंटायर डे अगर आपने देखा होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करता है सो, और जब दूसरे दिन ओपन होता है मार्केट, सो जनरली एक गैप अप से होता है या गैप डाउन से होता है। तो ये जो गैप अप और गैप डाउन का जो मोमेंटम है या ये जो पॉइंट्स है वो अगर किसी को इनकैश करने हैं, तो दीज आर द जनरली कैरी फॉरवर्ड ट्रेडर्स who would like to trade in the specifically last hour of trade and they would like to exit also in the morning period। अभी हम इसका एक एग्जांपल देते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी फेड का अनाउंसमेंट था और हमारा मंथली एक्सपायरी भी था, ठीक है, तो ये दोनों चीजें थी। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन देखते हैं जो भी ट्रेडर्स ने लिया होगा, तो वो आई थिंक दूसरे दिन जब निफ्टी ओपन हुआ पोस्ट अनाउंसमेंट, तो लास्ट डे था, तो उससे पहले ऑप्शन का प्रीमियम भी काफी कम था। और हम जिन्होंने भी वो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लिया होगा, दूसरे दिन मार्केट सीधा 170 180 190 पॉइंट्स ओपन हुआ, उसके बाद अराउंड 250 पॉइंट्स रैली कर गया। सो एकदम जो ओपनिंग वाला रिस्क है, ये लोगों को ये जो ट्रेड्स थे वो फेवरेबल हो गए। ये कंडीशनल रहते हैं। अगर आप इसको बोलोगे कि रशिया यूक्रेन वाला सिनेरियो है, वहां पे शायद आपको हिट ज्यादा बैठ सकता है, बट व्हेन यू नो कुछ इवेंट है, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन में कुछ रिस्क लेना चाहते हो या फ्यूचर्स में रिस्क लेना चाहते हो, then I think that would be the right category for you। और एक फिफ्थ कैटेगरी हम लोग जाते हैं टेक्निकल पोजिशनल की तरफ। अभी तक जो हमने 4 कैटेगरीज दैट वी हैव डिस्कस, इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बट एक ट्रेडर्स का ऐसा एक कैटेगरी है जो काफी मीडियम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पोजिशंस होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑप्शन ट्रेडर देखें, देयर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रॉसली 1 डे टू 1 वीक, अगर 5 डेज भी देखते हैं तो 5 दिन के आसपास निकल जाते हैं। अगर हम डे ट्रेडर्स देखते हैं तो वही सिंगल डे में ही वो पोजीशन क्लोज करके निकल जाते हैं। बट जब टेक्निकल पोजिशनल ऐसे होते हैं जो एक बड़ा व्यू लेते हैं मार्केट के ऊपर, और दे वुड लाइक टू कंटिन्यू, आई थिंक फॉर द डेट टारगेट्स ऑन द हायर साइड उनके अच्छे होते हैं, वेराज उनका स्टॉप लॉस जो होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है। सो रफली अगर मैं बात करूँ तो उनका होल्डिंग पीरियड होता है 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन। उनका प्राइस टारगेट रहते हैं 5% टू 10%, वो भी हायर साइड पे रहते हैं। उनका स्टॉप लॉस रहता है जो अराउंड 4% टू 5% रहता है। उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं, बट दे वुड लाइक टू एंजॉय द लार्जर मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। ओके, सो ये थोड़ा सा जब आपको वीकली पे ब्रेकआउट मिलता है, सिलेक्शन कैसे करें दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको कहीं वीकली में ब्रेकआउट मिलता है या कोई मंथली सपोर्ट्स पे स्टॉक रिवर्स हो रहा है। अनदर पॉइंट इज कोई फिबोनाची लेवल है 60% पे अगर स्टॉक रिट्रेस होकर रिवर्स हुआ है, देन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। द सेकंड कैटेगरी उसमें ही सिलेक्शन करने वाले की काफी ओवरसोल्ड मार्केट है या फिर काफी ओवरबॉट मार्केट है, तो वो शॉर्ट करने के लिए दे जनरली प्रीफर विद द मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। And the last category which I like the most is the techno funda category। This is very unique and interesting concept I believe। इसका रीजन ये कि अगर we combine the advantage of technical and the fundamental। टेक्निकल में अगर स्टॉक स्ट्रांग है एग्जाम्पली, फंडामेंटल में भी स्टॉक स्ट्रांग है, देन वी जनरली गिव अ बाय रिकमेंडेशन ऑन दैट। ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी है और इसमें से स्टॉक्स कम आते हैं, बट आई थिंक ये काफी प्रॉमिसिंग और मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी लगता है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, जो ट्रेडर्स होता है उनका इंटरेस्ट कहाँ पे हो जाता है कि टेक्निकली स्ट्रांग अगर स्टॉक है तो दे कैन गो एंड एंटर इनटू दैट स्टॉक, तो वो एक अलग कैटेगरी होते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि फंडामेंटली स्टॉक काफी स्ट्रांग होता है, बट टेक्निकली उसमें लोअर टॉप बन रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो भी वो क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा। बट ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है और जहाँ पे टेक्निकल भी फॉर्मेशन स्ट्रांग है। सो ये कॉम्बिनेशन अगर दोनों का वर्क हो रहा है, सो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। दोनों क्राइटेरिया जब स्टॉक क्लियर कर रहा है या कोई सेक्टर या कोई स्टॉक क्लियर कर रहा है, चांसेस ऑफ कंटिन्यू दैट टेक्सचर इज फार बेटर देन द अदर स्टॉक्स। सो आई थिंक ये कैटेगरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू द टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स। ओके,
यहाँ पे हम लोग पहला रिपोर्ट्स जो हम बोलते हैं वो है मार्केट मॉर्निंग। ये एवरी डे हम लोग बिफोर मार्केट ओपन्स पब्लिश करते हैं। आपको वहाँ पे निफ्टी के जो आज एक कमेंट्री मिलेगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट कमेंट्री, 4-5 लाइंस का होता है, और वहाँ पे हम व्यू देते हैं हमारा कि आज के दिन में मार्केट क्या हो सकता है। दूसरा, इसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि ये मार्केट ओपन होने से पहले आपके हाथ में आ जाता है। सो इसमें इमोशंस आते नहीं, जो भी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल है या जो भी उसमें चार्ट फॉर्मेशन है, उसी के हिसाब से हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। सेकंड, वही है, उसी का एक्सटेंशन है मार्केट वीकली। मार्केट वीकली में एवरी मंडे हम लोग पब्लिश करते हैं, और उसमें आता है कि ये वीक में मार्केट कैसा चलेगा। ऑब्वियसली आपको उसमें दिखेंगे कि सपोर्ट्स काफी दूर है या रेजिस्टेंस काफी दूर है, बट ये वीक का व्यू होता है। दोज हु वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मार्केट व्यू, ये निफ्टी का आता है। उसमें बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम मेंशन करते हैं, और बट मोस्टली ये रिपोर्ट आता है निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। द थर्ड कैटेगरी इज ट्रेडर्स प्लेबुक। आई थिंक ये इंट्राडे टूल है। इसमें आपको 3 to 4 सपोर्ट्स लेवल आते हैं, 3 to 4 रेजिस्टेंस लेवल आते हैं। प्राइवेट टेबल नहीं है यहाँ पे, एक डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से हमने वो बनाया है। आई थिंक इट इज वर्केबल है, स्पेशली फॉर द डे ट्रेडर्स के लिए है, जिनको भी सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 चाहिए, सपोर्ट 3 कहाँ है वो चाहिए, या मोमेंटम कैसा है, ट्रेंड कैसा है। तो उसके लिए एक ट्रेडर्स प्ले बुक करके एक पीपीटी हम लोग शेयर करते हैं। और जो लास्ट रिपोर्ट जो है वो टेक्नो फंडा होता है। आई थिंक ये 3 या 4 रिपोर्ट्स है, और ये 5 to 6 कैटेगरीज है जो टेक्निकल डेस्क उसके ऊपर काम करता है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन, रैप अप माय प्रेजेंटेशन विद अ कोट: द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड। आई थिंक मनी इज सेकेंडरी। अलेक्जेंडर एल्डर सेड दैट, एंड आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि हम लोग नो डाउट कि प्रॉफिट इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग, बट मोस्टली क्या होता है कि अपने हाथ में होते हैं अच्छे स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, और ट्राई टू फोकस ऑन अ गुड क्वालिटी स्टॉक्स। यही फोकस करना अपने हाथ में होता है। और अगर अपना ये वर्केबल है टूल, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आई थिंक दैट स्ट्रैटेजी विल वर्क। सो दैट्स इट माय एंड। आई थिंक श्रीकांत सर। Yes, यस। fine. So these are the topics that we are recommending, uh, which are means we have taken a few stocks from the entire recommendation list, but in that these stocks we like most at current levels. Macro tech developers from the real estate basket, then Cummins India, which is like still having almost 10 to 12% upside from current levels. We also like Mahindra and Mahindra from the auto index on which we discussed. Indigo is also one of the top pick where the upside is quite significant, which is around 40%. No doubt that it depends upon the overall activity and rate of crude prices, but broadly we are of the view that the company is like holding well above the important lows, and it is like just the we can say the monopoly sort of now the business for Indigo. So it will certainly help to the company in the long run. We like ICICI Bank, Axis Bank from the financial basket, Hindalco from the metal basket, which did well in today's date. In fact, it has broken the crucial level of 400. It was around some 410, 415 towards the end. SRF as well as Sapphire Food from the FMCG basket, chemical basket. SRF looks good. Aegis Logistic and BPCL. So these are the stock on which one can invest with a view of next 12 months. So these are all picks based on the fundamental views and for the 12 months, for the next 12 months. Next. So there are few products on which just I will not take more time here because we have to go for the Q&A session. These are the products that the fundamental team is offering to the clients, and in that the very first one is Opportune, on which we in which we try to give those recommendations or those companies which are available at decent levels
uh, from the immediate highs, or if we just compare these companies with the fair value, then if they are uh, trading cheap, then we try to re-enter into the same companies at lower levels. So opportune is certainly the product which is like the, we can say it's opportunity based sort of product. And in the past or in the near future also, we recommended many stocks. Very recently, we recommended stock Sapphire Food, as well as few other stocks like SBI cards and all. So these are the stock on which we, PVR was also the stock in which on which we initiated call when the stock was around some 1900. So basically, actually, it helps to invest in those stocks which are fundamentally really good. Rating Monitor uh, is the unique product on the street, and here we try to cover those companies where there is bigger event. I would to say event in terms of their change in the rating. So sometimes what happens after the fundamental reporting, we see there is like change in the recommendation from buy to sell or from sell to buy. So those companies we try to cover in the rating monitor. उसके बाद मंथली वेबिनार्स हम लोग काफ़ी करते हैं, एवरी मंथ मंथली वेबिनार्स होते ही होते हैं। साथ ही साथ हम सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक वेबिनार करने की भी कोशिश करते हैं इन द मिडल ऑफ द मंथ। सो ये सब वेबिनार्स है, कुछ हमारे पॉडकास्ट है, आप प्लीज़ इन सभी के ऊपर फोकस कीजिए। इन सभी पे आपका, हमें लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो यहाँ पे इस मार्केट्स में काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज होती है या जो मौके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, उससे आप इनकैश कर सकेंगे। साथ ही साथ हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और साथ ही साथ टेलीग्राम। तो आप इन सभी के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे रिसर्च टीम है और ये हमारा डिस्क्लेमर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। बट सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट अभी सेशन होने वाला है वो है Q&A, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेरीज को हम आंसर करेंगे। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जतिन दमानिया फ्रॉम द मेटल सेक्टर, एज वेल एज ही लुक्स आफ्टर केमिकल सेक्टर। मीडिया में भी उनकी वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्टडीज़ है, और मीडिया के ऊपर भी वो बात कर सकेंगे अगर आपको पीवीआर के बारे में जानना है। वी हैव सुमित पोकरना हु लुक्स आफ्टर I'm to say oil and gas as well as technology. So वहाँ पे जो दो बड़े सेक्टर है उसके ऊपर काम करने वाले सुमित सर हमारे साथ है। अरुण, ही लुक्स आफ्टर सीमेंट एज वेल एज ऑटो, स्पेशलाइजेशन ऑटो का है, और आजकल बहुत फॉर्म में रहते हैं वो। सो पूरा ऑटो इंडेक्स ही न्यू हाई में है, तो फिर तो देखो फेस पे रौनक भी बनी है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर ट्रैक करने वाले जो हमारे एनालिस्ट है वो है हिमाली धामे, और शी इज़ ऑल्सो हैविंग एक्सपर्टीज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल सेक्टर। अमल आठवले जो टेक्निकल कॉल्स या टेक्निकल स्ट्रेटजीज देते हैं वो भी हमारे साथ है। सो द एंटायर टीम इज़ विथ मी, और कुछ और भी एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आज हमने स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्वेरीज है। सो ओवर टू रिनी। रिनी, विल यू प्लीज help Sure. us in going through with this the entire list of questions Yes, sir. and queries? Yes, sir, we will open the floor for Q&A now. And I request participants to drop their questions in the comment section below. We already have quite a few questions, starting with the first one, which is on banking sector. Hemali, one of our participants is asking, Keval Patel. He is asking, what do you think of banking sector and what is your view on HDFC Bank? So overall, as a sector, we find it very attractive. We have seen quite a few results which has shown strong top line growth. At the same time, the provisioning cost has come down really sharply. The third positive criteria is they're making a lot of investments in infrastructure and in expansion, which is going to help growth in the medium term. Now, a major part of this growth is coming because of
higher inflation. If you read commentary of people, you will see a lot of companies like JSW Energy or others who's talking that we have reduced our deleverage, our working capital cycle has risen, and that is why the demand for credit has also risen. As long as we don't see a problem with the ability to pay, we we strongly believe that the sector is in good shape. And we believe that as long as the inflation isn't under control, so as the trajectory of inflation is not out of hand, we don't believe that the ability to pay will be impacted. So inflation is a key criteria here for the sector, because the other factors that affect the sector, which is capital or provisioning for the previous leg of the cycle, are all in good shape. And as of now, we believe inflation is on trajectory to come down, and therefore we are positive on the sector as a whole. Coming to HDFC Bank, it remains a strong franchise on a standalone basis. However, in the next 1.5 year, it will be in midst of a merger transition. So there are uncertainties with regards to regulatory approvals that are there. At the same time, what are the costs that will come when it merges? From a longer term perspective, if your horizon is 2 years to 3 years period, the franchise is very good, but you will see uncertainty and sideways movement for some time in the near term. And the third point about HDFC per se, with comparison to others, is the franchise HDFC that was once known strong to be strong. That today even ICICI and Axis are a strong franchise. So because investors have opportunities across, you won't see the peak valuation that HDFC used to get. Having said that, we've mentioned that from a medium term perspective, it's a good franchise to buy. Thanks, Thank Rini. you, Hemali. Moving on to next question, which is for Sumit sir. Sumit sir, Sudhanshu wants to know your views on Zomato. Zomato, if you see, then globally, all because of the rise in interest rate, all these e-commerce companies have seen corrections, including large cap and small cap and mid cap. All sort of companies have correction because of the concern that if interest rates will rise, then the valuations or the discounted cash flow will give you lesser value in terms of fair value for the stock. So that is why these stocks are falling. And one particular thing about these startups or the e-commerce companies are that the cash flow is currently they are incurring losses, and the cash flow which will they will generate, they are very far away. They are not going to come in a year or so. So these stocks are beaten down by the market very fast because of these reasons. But having said that, the the strong growth story still remains intact. We are seeing the Zomato is gaining market share in terms of a lot of activities which they are doing. In fact, they are diversifying their revenue sources also. So broadly, one can say that these are more of a short-term blip which has come, but we fundamentally we remain bullish on the stock. We believe the upside is significant from here. So long-term investors should buy this stock at these prices. Thank you, Sumit. Jatin, our another participant is Kirit is asking, what should I do with Hindalco? So, as Shrikant has already stated that Hindalco is one of our top pick in the metal space where we were target of 540. So we believe that yes, Hindalco stands to gain in the time to come because of their Novelis numbers. Now Novelis have almost 60 to 70% of the EBITDA. The recent correction in the aluminum prices and the capex of $11 billion which company announced, Street has taken it negatively. But if you look from the overall perspective, the large portion of the capex is largely a back-ended. So definitely there would be enough cash flow will be in the hand of Hindalco to fund this capex. And given that Novel is to do an EBITDA of 500 dollars per ton, in last one quarter we have seen that coming to sub 500, and probably this quarter we would be seeing somewhere around 470, 480. But it's largely insulated from the fall in the aluminum prices because they are moving into a beverage cage and the automotive products, which is a value added thing, and that will help them to drive the overall numbers.
In the domestic market, given the backward integration in terms of sourcing alumina from the Utkal, would also help the company to sustain the downturn. I mean, sharp downturn in the overall prices. So, as a house, definitely currently Street has taken negatives of the in the metals, but we believe that Hindalco is well positioned to capture the market in the time to come. And given the deficit in the aluminum space, we believe Hindalco tends to gain in the near to medium term, and that is why it's one of the top pick in the metal space. Thank you, Jatin. Next question is on the technical side. Amol, the participant is asking, do you expect a Nifty back to 16,000 levels? How many days could it take? Cause I'm short at 16,100. Amol. Amol, can you please unmute yourself? Yes, yes. Short at 16,000. Now it He is is audible. short at 16,100. 16,100. Oh, Yes. I think it's a good question, in fact, because lots of traders are really surprised with that rally. You know, from 16,000 to 17,200 very fast within 10 to 20 days. Okay. So I think lots of short traders stuck at that level. But I think that the short-term texture of the chart is still into the positive side. The reason behind that, the stock is still holding higher bottom series, and on weekly chart it is still forming long bullish candle. So right now, I think first we have to look that I, we are expecting a sideways momentum firstly, and then I think if Nifty break below 16,800, then I think there is a possibility of a further correction till 16,600. So I think it is very difficult to say right now when it will come, because the rally is too fast, and currently market is now trading, as I mentioned, near 200-day DMA, which is again the important level. So we have to wait for a while, and on the higher side, 17,000, I think the rally likely to continue. If the momentum continue, then I think 17,300, 17,400 also possible. So for me, I think 16,800 is a sacrosanct level. Below, if Nifty start trading below that level, then I think there is a possibility of a short-term correction. But right now, I think looks slightly difficult. Thank you, Amol. Next question is from the auto sector. Arun sir, can you give your top three picks from auto space? Yeah, thanks, Rini. Uh, we have actually talked a little bit on the auto side where the Shrikant's mentioned, where the index is trading at new highs. We have seen off late there has been interest. The segment, the sector was in, had a painful period for quite. Pre-COVID started pre-COVID with a cyclical downturn, and then we had COVID, and there were a lot of other issues as well for the auto sector. But the situation overall for the auto sector seems to be improving. When we look at the volumes, we are seeing volume growth now happening, and we are expecting good volume growth to happen across all the segments, be it two-wheeler, commercial vehicles, and passenger vehicles from the medium term. When I say medium term, I'm looking at maybe a 2 year or maybe a 3 year perspective as well. Commodity prices have also started to fall off. The gross margins or the EBITDA margins for these auto companies were under pressure for the past 1 year. Now, with some decline in commodity prices, we are expecting, the margins should also see some improvement going ahead, and possibly we would see some impact of that coming into more impact of that if the commodity prices remain here or falls down further. We could see some more impact in second half of this year. Overall, we believe the medium and heavy commercial vehicle cycle will continue to grow at a good pace. In that, we are positive on Ashok Leyland. We will be reviewing a target price there. The results have just come in today. We'll be listening to the call and reviewing a target price there. We like Mahindra and Mahindra. We have seen good launches from their end. The overall order book is also strong. As in, when we see the semiconductor issue getting resolved, we would see the passenger vehicle industry doing well. So Mahindra and Mahindra is one company we like from that space. Further, in the tractor business too, Mahindra is a market leader, and there too, if the monsoons have been decent so far,
And if there's recovery in the rural parts, we could see tractor volumes to grow, and that would be positive in Mahindra. And even on valuation perspective, the stock is available at a decent valuations. So Mahindra is another stock we like. Tata Motors, slightly risky and slightly volatile. They are doing well in the domestic business. The numbers came in were below expectations, but we expect the situation and the performance for the company to improve going ahead. Domestic business is doing well, both commercial and passenger vehicle. JLR, there has been a little bit of challenges, but they have significantly brought down their break-even points. So with volumes improvement, we could see JLR business also performing, but that could happen slightly over a medium term. Overall, again, we are positive in Tata Motors. We have a long-term fair value of 500 on the stock. Bajaj Auto in the two-wheeler space is one what we like in terms of valuations. They are good. Two-wheeler has been a laggard in terms of recovery, but we believe two-wheeler we are already seeing a little bit of recovery there, and we expect volume recovery will continue. And this coupled with commodity price reduction, that could be positive for margins from second half. So these are some of the positives of Bajaj Auto in the two-wheeler space. In two-wheeler, we like Bajaj Auto. We like in the other segments, we like Mahindra and Mahindra. We like Tata Motors. But again, as I said, slightly risky and slightly volatile. And Ashok Leyland will be reviewing the numbers post attending the call on Monday. That's it. Thank you, Arun sir. Now, participants, due to time constraint, I'll take one last question. Shrikant sir, one participant, Suresh Patel, is specifically asking for your views on Cummins. And I would also like you to answer our questions on Jubilant Foodworks, sir. Yeah, sure. Yeah, I think there are a number of queries which even I can see, and a lot of people they are asking about number of stocks. So uh, for Jubilant Foodworks, I think the pattern is very clear. It is forming some reversal pattern on daily, weekly basis. It is diverging positively, and even if we go through with a few other macro factors, then wheat prices are also falling or they are coming down from the highs. So certainly it is going to help to the entire sector. But in that specifically, we like Jubilant, which is currently around some 550, 540 sort of levels. From here, we are expecting stock to move towards 600. But in the near future, we are expecting stock to even retest the levels of maybe 700 based on technicals. We also like few other companies like Devyani or Sapphire Foods, Westlife. All these stocks are on our watch list, and we are tracking them very closely. So if there is like if there are any developments for the sector, we will come out with specific recommendation. For Cummins also, we are bullish, and there also we are expecting stock to move towards 1350. In fact, in this particular list, we have added this stock to buy. Uh, Along with a few other companies, I mean to say those who are into strong momentum like auto companies, we have added few companies from the chemical sector, from the metal basket, is only because they have fallen to their extreme levels, and we are expecting furthermore. I'm going to say if the this thing starts turning in the favor of these companies, I'm going to say that whatever the uh, uh, rules and some announcements were there from the government, if that starts easing, then I think all these metal companies will also start moving upward. Also, we need to track the commodities in the global market. So if there also we are seeing some reversal activity, some positive activity, and that's why uh, stocks on which we have bullish view, we have recommended those companies. So in our portfolio, I think the portfolio should be balanced. It's not that only we need to focus on only those companies which are doing well at current point. If there are companies which have some values, हमें उसे भी हमारे पोर्टफोलियो में रखना उतना ही जरूरी है. साथ ही साथ कुछ एक लोगों ने पूछा है कि अदानी ग्रुप पे क्या व्यू है, और अब वैसे देखा जाए तो अदानी ग्रुप को हम उतनी क्लोजली ट्रैक नहीं करते, इसके लिए वहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक फंडामेंटल व्यू नहीं लेना है. लेकिन यस, ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक्स अच्छे हैं. आप विद सम स्पेसिफिक स्टॉप लॉस बिल्कुल काम कर सकते हैं. जहाँ पे हमने देखा है कि अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना भी उतना ही ज़रूरी है. इसके अलावा अगर कुछ बीपीसीएल के ऊपर भी कुछ कोई लोग पूछ रहे हैं, या तो अशोक लेलैंड के बारे में भी जस्ट
अरुण ने बताया था, तो हमें लगता है कि अशोक लेलैंड और ये सब ऑटो के कंपनीज है, वहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है और हमें लगता है कि और भी मोमेंटम है। लेकिन अगर रिफाइनरीज की बात करें तो नो डाउट बीपीसीएल एक हमारा टॉपिक है जिसे हमने इंक्लूड भी किया है हमारे लिस्ट में। और साथ ही साथ हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये भी स्टॉक एक डिसेंट अपसाइड के साथ अवेलेबल है। 2400 2450 के करीब अभी मिल रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 2850 या 2900 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो 12 मंथ्स व्यू के साथ काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हम बुलिश है, लेकिन अभी देखा जाए तो वैसे काफ़ी सारे क्वेरीज है और उन सब क्वेरीज को तो हम आंसर नहीं कर सकते। लेकिन ब्रॉडली हमें लगता है कि जो इंडियन मार्केट्स है वो एक अलग फेज में है। जब तक कोई अनएक्सपेक्टेड शॉक नहीं आता, तब तक हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स में परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। इनफैक्ट आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल मार्केट्स में अगर और एक परफॉर्मेंस देखने मिलता है तो इंडियन मार्केट्स उसमें आउट परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा हमारा व्यू है। तो इसी के साथ हम ये आज का जो सेशन है वो यहीं पे एंड करते हैं। आप हमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उसे उन पर हमें आप लोग ट्रैक कर सकते हो। और प्लीज़ आपके जो रीट्वीट्स है या तो जो आपके कमेंट्स होते हैं या तो जो आप इस पर्टिकुलर ट्वीट्स को या जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं उनको अगर आप लाइक करते हो तो इससे एक बात ये समझ में आती है हमारे फॉलोअर्स को कि इस पर्टिकुलर कंटेंट में कहीं ना कहीं दम है, या इस पर्टिकुलर कंटेंट को, ये कंटेंट जो होता है या जो भी अपडेट्स हमारे जो होते हैं वो रीडिंग या उसे फॉलो करने के लायक है। तो आप प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट रियली अगर वर्थवाइल है तो आप प्लीज़ से रीट्वीट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे फॉलोअर्स के लिए भी फायदा होगा। थैंक यू। Thank you. Thank you.